पॉलिनोमियल, ठीक है। जब मैं पॉलिनोमियल कहता हूँ बेटा, सो कंसीडर, सपोज मैंने कहा 3x रेज टू 5 प्लस 4x क्यूब प्लस 5x plus 7 equal to 0. This is one polynomial. Suppose next polynomial है मेरा 8x raised to 4 plus 7x square plus 9x plus 3 equal to 0. ये दूसरा polynomial है, polynomial 1 and polynomial 2. Now ये तो हमारा normal polynomial है, x के power में है. Let us represent the polynomial using linked list. चलो देखते कैसे स्टार्ट। तो बेटा 3x रेज टू 5, तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, तीन पार्ट में। ये रहा 3, ये रहा x और ये रहा नेक्स्ट, इट विल पॉइंट टू द नेक्स्ट नोड। इसके पास भी तीन पार्ट होंगे, ये रहा 4, ये रहा 3 एंड नेक्स्ट, ये रहा 5, ये रहा 1 और ये नेक्स्ट। ये 1 क्या मतलब x का पावर है बेटा, ये रहा 7 0 एंड नेक्स्ट इज नल। सो आप ये समझने की कोशिश करो कि है क्या ये, व्हाट इज दिस, दिस इज कोएफिशिएंट, दिस इज सॉरी ये इधर होना चाहिए 5, दिस इज x का पावर। हाँ this is x ka power 5 and this is pointer next, that will point to the next, it is 4x cube, so power is 3, next 5x raised to 1 and it is 7, basically it is 7x raised to 0. Can you understand this? Can you understand this? Yes. So this is my first polynomial and there is, इसको start point करेगा and this is P1 का start, polynomial 1 का start, second we have 8 4, this is a pointer pointing here, we have 7 2, we have a pointer pointing here, we have 9 1, we have a pointer pointing here, we have 3 0 and we have a pointer pointing here. So this is P2 polynomial 2 का start pointing here. You got it? पहले समझने की कोशिश करो, ये समझा बेटा? Now let's say how it works. Let resultant be polynomial 3 और उसका start कैसे जाएगा, पहले ध्यान से देखना। वन देखो, फर्स्ट पॉलिनोमियल का पावर सेकंड पॉलिनोमियल के पावर से कंपेयर करने का। Is the polynomial power is greater than this ka power? Yes. So here we will have a node that will have only this element 3 5 and next and then 5 हो गया। Now you compare with this 3. See polynomial 1 का पहले नोड का पावर polynomial 2 के पहले नोड के पावर से ज्यादा है, तो रिजल्ट में ये आएगा। अब इसका पावर 3 है, इसका 4, तो रिजल्ट में ये आएगा 8 4। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। सो ये इधर आएगा 8 4। अच्छा ये 5 4 5 4 आ गया, फिर 3 आएगा 4 3, फिर 2 आएगा, क्योंकि ये सब ये पावर वाले एक ही एक नोड है। फिर देखिए 1 पावर के 2 नोड है, तो दोनों का कोएफिशिएंट ऐड होगा। 9 + 5 14,
1 एंड देन ये दोनों भी कोएफिशिएंट ऐड होंगे क्योंकि पावर सेम है. 10 0 and null. Can you understand what is going on? Yes sir. तो ये रिजल्ट है. तो ये हमारा ऑर्डर है. हम पहले क्या देखते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं हियर every node in the linked list is represented using structure. And what is that structure? Just have a look. Type def struct node. Let us say integer. हर नोड पे एक इंटीजर कोएफिशिएंट होगा, एक इंटीजर पावर होगा, एक इंटीजर कोएफिशिएंट होगा, एक इंटीजर पावर होगा, और क्या होगा, एक नोड टाइप पॉइंटर होगा. Struct node asterisk next. So this is every node will look like. Every node will have coefficient, every node will have power, and every node will have a pointer next. Got it? Yes sir. So let us see the program and then we will understand better. Because अगर ये समझ गया then program is simple. Let's see the program. Okay, now please listen here. चलो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं. C और E मैंने नाम दिया यहाँ पे. C for coefficient, E for L. आप E for exponent बोल सकते हैं, आप power भी बोल सकते हैं, जो भी चाहिए. It is a structure for every node. So we have C for coefficient, exponent, and pointer next, and this is the node. यहाँ तक समझ गया सबको? And this is the linked list. Linked list will have a start only. मैंने जैसे वहाँ represent किया था. It is structure for linked list. ये दो चीजें समझ गई हैं क्या? पहले बताइए जरा. हर नोड पे कोएफिशिएंट होगा, एक्सपोनेंट होगा, उसका दैट इज द पावर ऑफ द वेरिएबल, और उसके बाद जो मेरा लिंक और एक पॉइंटर नेक्स्ट होगा. जो लिंक लिस्ट होगा उसमें सिर्फ स्टार्ट पॉइंटर होगा. यहाँ तक सब समझा? Yes sir. Okay. Now let us see. Now first go to the main, जैसे कि हम हमेशा करते हैं. Main में I created 3 linked list because addition of 2 linked list is a third linked list. We will need 3 linked list. First linked list का start null, second linked list का start null, third linked list का start null. I will read first linked list. First linked list का मतलब बेटा enter first polynomial. समझ गया? तो फर्स्ट पॉलिनोमियल में यूजर से लूंगा,
read L2, ampersand L2 means second linked list. So read first polynomial, and this will be what? Enter second polynomial. Any confusion? Clear? And now I will call add poly function. I will pass first polynomial का address. I will pass second polynomial का address, and I will pass third polynomial का address. Remember, third polynomial right now is empty. Is it clear? यहाँ तक समझ में है? I have created three linked list. Three linked list variable. Now why three? Because addition of two linked list is a third linked list. We initialize first to null, we initialize second to null, we initialize third to null. मुझे पहला लिंक लिस्ट चाहिए तो मैं यूजर को बोलूंगा रीड ampersand L1, enter first polynomial in first linked list. In L1 linked list, फिर मैं बोलूंगा enter second polynomial in L2 linked list. यहां तक सब समझ गया क्या बेटा? Can we go back to read function? Come on, tell me. पहले read function Yes. देखते हैं. चलो पहले read function. Yeah, here it is read function. Just see the read function. It is very simple. मुझे बोला enter number of term. अभी ये वाला जो एग्जांपल हमने सॉल्व किया था, ये वाला जो एग्जांपल में फर्स्ट पॉलिनोमियल में कितने टर्म है बताइए? 1 2 3 4, 4 टर्म है कि नहीं फर्स्ट पॉलिनोमियल में? Yes, sir. फर्स्ट पॉलिनोमियल में 4 टर्म है. सेकंड पॉलिनोमियल में कितने टर्म है बताइए? 4. 1 2 4 ही है. आप अलग अलग भी हो सकते हैं. तो एक काम करते हैं, एक में 5 रखे, एक में 4 रखते हैं. ठीक है, चलो. तो L1 के लिए सपोज फॉर L1 मैंने कॉल किया, एंटर फॉर L1 एंटर नंबर ऑफ टर्म n, सपोज मैंने 5 दे दिया. तो ये लूप 5 बार चलेगा. 5 बार क्या बोलेगा? एंटर कोएफिशिएंट n एक्सपोनेंट. तो पहला कोएफिशिएंट समझो मेरा है 3 और एक्सपोनेंट 5. 3 5 मतलब 3x5. Suppose I want this 3x5 plus 4x cube plus 6x square plus 5x plus 7. Suppose ये चाहिए मुझे. तो 1 2 3 4 5 टर्म दे दिया बेटा. तो c का वैल्यू पहले क्या होगा? 3 होगा. I इक्वल टू 1. c का वैल्यू 3, e का वैल्यू 5. बराबर है कि नहीं? पहला देखो 3 और 5 है. तो वो क्या करेगा? इस L1 में इंसर्ट एंड में एक नया इंसर्ट एंड फंक्शन कॉल करेगा. उसको लिंक लिस्ट भेजेगा, कोएफिशिएंट भेजेगा, एक्सपोनेंट भेजेगा. तो कंट्रोल विल गो टू इंसर्ट एंड. दिस इज सिंपल. इंसर्ट एंड मींस व्हाट? इंसर्ट एट द एंड ऑफ लिंक लिस्ट. समझा? तो देखो Yes. अब देखो इनिशियली तो स्टार्ट नल है. Insert and will do what? It will create a linked list C5. Next is right now null, and this is L1 का start. फिर I becomes 2. I become 2. C क्या है? 4. E क्या है? 3. तो ऐड हो जाएगा. Insert and call होगा. 4 3. Next is null, and this will point here. Are you getting it? फिर I is 3, C will be what? 6, E will be 2. 6x square ना बेटा, तो एक नया नोड ऐड हो जाएगा. 6 2, ये इसको पॉइंट करेगा, ये नल को. Then I become 4, C is 5, E is 1. 5x1, 5x raised to 1. So we will have 5 1 and null, and this will point here, and then we will have I is equal to 5, C is 7, E is 0, 7x raised to 0. नहीं समझा? Come on, tell me.
So when I call read function for L1, it will accept, in this case, 5 coefficient exponent and will add 5 node in L1 linked list. Agreed or not? Come on, tell me. हेलो सर will you समझा please हाँ बोलो बेटा, कोई कुछ बोल रहा है? सर एक बार प्लीज रिपीट कीजिए ना. मैंने क्या बोला, मेरे को फर्स्ट पॉलिनोमियल चाहिए था, तो देख मैंने यहाँ से रीड L1 कॉल किया, मेन से रीड एम्परसेंड L1 मींस रीड फर्स्ट लिंक लिस्ट. आई वांट फर्स्ट पॉलिनोमियल, करेक्ट? कंट्रोल रीड फंक्शन में आ गया इधर. हाँ मैं आ रहा हूँ सर बस रीड. स्टेटमेंट. हाँ हाँ हाँ, मैं पूरा बता देना ना. कंट्रोल रीड में आ गया, उसने मेरे को पूछा भाई इस लिंक लिस्ट में कितने टर्म चाहिए. मैंने कहा 5, और सपोज मेरे दिमाग में था 3x5 4x क्यूब 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7. तो 5 बार वो मुझसे कोएफिशिएंट और एक्सपोनेंट लेगा, और 5 बार इंसर्ट एंड कॉल होगा L1 लिंक लिस्ट में. पहला I1 होगा तो C3E5, तो इट विल ऐड 3 5, देन 4 3, देन 6 2, एंड तो 5 बार इंसर्ट एंड होगा बेटा. तो मेरा एक पहला लिंक लिस्ट या पहला पॉलिनोमियल रेडी हो गया है. अब यही को अब मैं सपोज आई एम कॉलिंग फॉर L2 के लिए सपोज n मैंने 4 ही दिया, तो 3x5 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4. समझो ये है मेरा 4 ही टर्म है. तो I1 होगा I1, C3 होगा, E5 होगा, 3 and 5 ना बेटा. तो एक लिंक लिस्ट में एक नया नोड होगा, इंसर्ट एंड कॉल होगा 3 5. यहाँ कौन कॉल रेफर करेगा? L2 का स्टार्ट. then I will become 2. सेकेंड टर्म के लिए 7 is the coefficient, 2 is the exponent. So C is 7, E is 2. Insert and in L2 link list 7 2, and this will point here. Then I become 3. C is 7, E is 2, 7 2. This will point here. And then we have I is 4, C is 4, E is 0. So 4 0. ये रेडी हो गया. क्लियर? कोई कंफ्यूजन? बताओ मुझे. नो. कोई कंफ्यूजन नहीं ना बेटा? तो इस तरह से मैंने दोनों लिंक लिस्ट क्या किए? रीड कर लिए. Yes? Everyone agreed? Yes sir. Now दोनों लिंक लिस्ट देखो, ये रीड फंक्शन I have called read function 2 times, so I have read 2 linked list, basically 2 polynomial. Now I am going to call add poly function, जिसको पहला लिंक लिस्ट सेकेंड लिंक लिस्ट, ये दोनों लिंक लिस्ट में तो एलिमेंट है, बट मैं थर्ड लिंक लिस्ट में भेज रहा हूँ. इसके अंदर तो एलिमेंट है नहीं बेटा, वो तो एम्प्टी है. Yes or no? So control will go to add poly function, control will come here, add poly function. Now have a look. What is L1? L1 में क्या क्या है बताओ? L1 में we have 3 5 4 3 6 2 5 1 7 0. Clear? And L2 we have, L2 में क्या है बताओ? 3
L2 is also 3 5, चलो कोई बात नहीं. And then we have 7 2, and then we have 9 1, and then we have 4 0. एक मिनट. 7 2 9 1 होना चाहिए. This should be 9 1. 9 1. यहां तक समझ गया L1 L2 का क्या सिचुएशन है? हेलो. Yes, sir. हाँ सर. Now have a look. L3 का स्टार्ट तो अभी नल है. राइट नाउ तो नल पे ही पॉइंट कर रहा है क्योंकि वो एम्प्टी है. नाउ हियर वी स्टार्ट. एवरीवन, let have two pointer P I Q. P will point to L1 का start, Q will point to L2 का start. So this is P and this is Q. Start. जब तक P नल नहीं हो जाता and Q नल नहीं, मतलब जब तक दोनों भी खत्म नहीं हो जाते, समझे, दो में से कोई एक भी खत्म नहीं है क्योंकि and है ना. L1 खत्म नहीं हो जाता और L2 खत्म नहीं हो जाता, तब तक ये चलते रहेगा. कोई एक भी नल तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा. यस सर. तो इसका मतलब टिल none of them ends. समझा? अब देखो, तो अभी P इधर है, Q इधर है. P नल है क्या? नहीं. एंड Q नल है क्या? नहीं. परफेक्ट. दोनों भी नल नहीं है. Yes. अब देखो, स्टार्ट. P का E ग्रेटर देन Q का E. व्हाट इज P का E? दिस इज C, दिस इज E. हाँ, C E C E C E C E C E C E C E C E. P का E, व्हाट इज P का E? 3. Q का E, व्हाट इज Q का, सॉरी, P का E is 5, Q का E is 5. Is P का E greater than Q का E? No. No. अब एल्स में नीचे आएगा. इस Q का E ग्रेटर देन P का E? नो. एल्स. एल्स मतलब दोनों सेम. मींस P का E इक्वल टू Q का E. अगर दोनों सेम है तो L3 लिंक लिस्ट में एक नोड इंसर्ट करो जिसमें कोएफिशिएंट का वैल्यू क्या होगा? P का कोएफिशिएंट प्लस Q का कोएफिशिएंट. Yes, sir. और एक्सपोनेंट कैन बी P का एक्सपोनेंट और Q का एक्सपोनेंट, क्योंकि वैसे भी दोनों सेम है. अरे समझा क्या? Yes, sir. देखो बेटा, दोनों का पावर सेम है 5 5. सो इन लिंक लिस्ट let us add L3 a new node whose coefficient will be added 6. in L3 coefficient is P. Since P का E is equal to Q का E, so the new node power will be added 6. Exponent can be any one of it. समझा क्या? This is what we get. And Yes, sir. अच्छा बेटा, दोनों से एक एक नोड ऐड हो गया, तो P को इंक्रीमेंट करेंगे एज वेल एज Q को भी करेंगे. Yes. तो देखो, दोनों ऐड होने के बाद टेक P टू द नेक्स्ट नोड, टेक Q टू द नेक्स्ट नोड. समझा? Yes. एंड नेक्स्ट वापस वाइल लूप ना. वाइल. अब P किधर आ गया? इधर. P नॉट इक्वल टू नल. यस. Q नॉट इक्वल टू नल. यस. अब P का E, व्हाट इज P का E? 3 ग्रेटर देन Q का E? यस. P का E is 3. Is it greater than Q का E, which is 2? Yes. So in L3 insert a node whose coefficient will be P का coefficient, whose exponent will be P का exponent. तो यहाँ पे आएगा एक नया नोड जिसका कोएफिशिएंट होगा P का कोएफिशिएंट, एक्सपोनेंट विल बी P का एक्सपोनेंट. एंड देखो, Q तो आया नहीं, P अंदर गया तो P आगे जाएगा, इसलिए सिर्फ P को बोलने का P का. Yes, sir. अब वापस हम इधर आ गए. वाइल लूप.
P not equal to null, yes. Q not equal to null, yes. P का एक्सपोनेंट ग्रेटर देन Q का एक्सपोनेंट, नो. देन Q का एक्सपोनेंट ग्रेटर देन P का एक्सपोनेंट, नो. तो दोनों सेम है, दोनों सेम है. Yeah. So we will create new node whose coefficient will be added 7 plus 6, 13. Power will be any one of it and दोनों आगे जाएंगे. समझा? Yes, sir. sir. अच्छा अब एक काम कर, यहाँ पे अगर हम 0 कर दें तो सिर्फ ये 1 वाला ऐड होगा ना. समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? हेलो, यू गेटिंग द कॉन्सेप्ट? हेलो, यू गेटिंग इट ना बेटा? Yes, sir. अच्छा, P किधर? P सॉरी ये P है. P किधर है? इधर. Q किधर है? इधर. P का कोएफिशिएंट ग्रेटर देन Q का, नो. P Q का सॉरी P का एक्सपोनेंट ग्रेटर देन Q का एक्सपोनेंट, नो. Q का एक्सपोनेंट ग्रेटर देन P का एक्सपोनेंट, नो. दोनों सेम है. A new node will be added. 5 plus 9, 14. 1. P भी इंक्रीमेंट होगा, Q भी. P नल नहीं, Q नल नहीं. Q का एक्सपोनेंट ग्रेटर देन P का नहीं, P का ग्रेटर देन Q का नहीं, दोनों ऐड होगा. 11 0 एंड फिर P नल हो गया, Q भी नल हो गया. कोई एक भी नल हो गया तो स्टॉप ना. समझा? अच्छा, दिस इज केस 1. एक मिनट, केस 1. केस 2 देखो. नाउ प्लीज कॉन्सेंट्रेट, प्लीज कॉन्सेंट्रेट. सपोज L1 में मैंने कहा 7 5. और यहाँ पे लिखा मैंने 6 2. That's it. So it is 7x raised to 5 plus 6x square. That's it. बराबर. और सपोज L2 में है 6 4 9 3 4 2 5 1 8 0. समझा? ये L2 है. Can we start? Can we start? Yes, sir. चलो, ये रहा P, ये रहा Q, ये रहा L3. स्टार्ट. P का एक्सपोनेंट ग्रेटर देन Q का एक्सपोनेंट, यस. तो L3 में एक नया नोड होगा. L3 में एक नया नोड होगा. समझ रहे हैं ना बेटा क्या कर रहा हूँ? So you must understand this thoroughly. L3 में एक नया नोड होगा जिसका एक्सपोनेंट P का होगा, कोएफिशिएंट P का एक्सपोनेंट भी P का. P को बोलो P का नेक्स्ट. P इधर आ गया, Q अपनी जगह पर ही है. देन वापस. P नल है? नहीं. Q नल है? नहीं. P का एक्सपोनेंट 2 ग्रेटर देन Q का एक्सपोनेंट, नो. एल्स Q का एक्सपोनेंट ग्रेटर देन P का एक्सपोनेंट, यस. तो Q इधर आएगा. तो insert and whose coefficient will be Q का coefficient, his exponent will be Q का exponent and Q को बोलो Q का next. Then P null है? नहीं. Q null है? नहीं. P का exponent greater than Q का exponent? नहीं. Q का exponent greater than P का exponent? हाँ. तो एक नया नोड ऐड होगा. Q का कोएफिशिएंट 9, Q का एक्सपोनेंट 3. Q को बोलो Q का नेक्स्ट. जिसका एलिमेंट इंसर्ट हो रहा है वो आगे जाएगा. अगेन, P नल है? नहीं. Q नल है? नहीं. P का एक्सपोनेंट ग्रेटर देन Q का एक्सपोनेंट? नहीं. Q का एक्सपोनेंट ग्रेटर देन P का एक्सपोनेंट? नहीं. दोनों सेम है? हाँ. तो एक नया नोड ऐड होगा whose coefficient will be P का कोएफिशिएंट प्लस Q का कोएफिशिएंट 10. एक्सपोनेंट किसी और का, कोई भी एक, किसी एक का. अब यहाँ पे दोनों इंक्रीमेंट होंगे.
P भी और Q भी. Now P not equal to null false. तो while loop terminates. एक खत्म हुआ है, दूसरा तो भी बाकी है ना बेटा. यस सर. अच्छा, यहाँ पे कोइंसिडेंटली P पहले खत्म हो गया. ऐसा भी हो सकता है कि P में 2 नोड है, Q में 5 नोड है. ऐसा भी हो सकता है कि P में 5 नोड हो, Q में 2 नोड हो. समझ रहा है ना बेटा, कुछ भी हो सकता है ना. यस सर. तो लॉजिक ऐसा है कि अगर P खत्म हो गया तो Q के सारे नोड एज इट इज एंटर कर दो. अब जैसे देखो ना, while loop खत्म होने के बाद, दिस इज while loop के बाद जब तक P नल नहीं हो जाता, मीन्स व्हाट, मीन्स Q खत्म हुआ है. अच्छा, और यहाँ पे क्या लिखा है, जब तक Q नल नहीं हो जाता, मतलब P मीन्स P खत्म हुआ है. दो में से कोई एक ही एग्जीक्यूट होगा. अभी अपने केस में अपना P नल है. देखो, अपना P नल है तो P नॉट इक्वल टू नल फॉल्स, तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा. इसका मतलब ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा. जब तक Q नल नहीं हो जाता, L3 में Q का कोएफिशिएंट और Q का एक्सपोनेंट ऐड करते जाओ. Q को बोलो Q का नेक्स्ट. नहीं समझा बेटा? देखो, अगर ये while लूप खत्म हुआ है तो इसके दो कारण होंगे. या तो P वाला लिस्ट खत्म हो गया है, या तो Q वाला लिस्ट खत्म हो गया, या तो दोनों. यस सर. हमारे केस में कौन सा खत्म हुआ है? P. देखो, हमारे केस में कौन सा खत्म हुआ? P. तो अभी हाँ. क्योंकि अभी ये दो नोड बाकी है ना, अभी अपना वाला केस देखो जरा, बहुत संभाल के अपना केस देखो. ये कंडीशन पे तो टर्मिनेट हो जाएगा. P नॉट इक्वल टू नल फॉल्स. बेटा, मेरा कौन सा कंडीशन देखो, मेरा while लूप क्या बोलता है? P नॉट इक्वल टू नल एंड Q नॉट इक्वल टू नल. तो या तो P नल होगा, या तो Q नल होगा, या तो दोनों नल होंगे. यस और नो? यस यस. सर. ओके. तो हमें पता नहीं ना कौन सा नल होगा, तो अब हम लूप के बाहर आएंगे और चेक करेंगे. जब तक P नल नहीं हो जाता, अभी यहाँ पे तो P ऑलरेडी नल है, तो वो वाला लूप चलेगा ही नहीं. तो समझ रहा है? तो दिस while loop will not work here. This while loop will not work here. Then जब तक Q नल नहीं हो जाता, L3 में Q का कोएफिशिएंट Q का एक्सपोनेंट करो. चलो ठीक है, स्टार्ट. Q अभी कहां पे है? यहाँ पे. Q नल है? नहीं. तो L3 में Q का कोएफिशिएंट, Q का एक्सपोनेंट, Q को बोलो Q का नेक्स्ट. Q नल है? नहीं. तो L3 में Q का कोएफिशिएंट, Q का एक्सपोनेंट, Q को बोलो Q का नेक्स्ट. Q नल है? हाँ, रुक जाओ. L3 रेडी हो गया? यस सर. नहीं समझ? यस. पक्का समझ रहा है? यस. एंड नाउ, सो हमने ऐड पॉली कॉल कर लिया. सी, ऐड पॉली. उसके बाद फर्स्ट पॉलिनोमियल कॉल डिस्प्ले करना है तो L1 करेंगे. आई एम कॉलिंग डिस्प्ले फंक्शन. सी, इट इज व्हाट, सिंपली डिस्प्ले द एलिमेंट ऑफ सिंगली लिंक लिस्ट. देखो ना, डिस्प्ले फंक्शन. स्टार्ट नल है तो बोलो पॉलिनोमियल मिला ही नहीं, बराबर है. लिंक लिस्ट एम्प्टी है. नहीं तो P को बोलो स्टार्ट. जब तक P नल नहीं हो जाता, P का कोएफिशिएंट एक्सपोनेंट दोनों डिस्प्ले करो. बीच में x पावर डाल दिया मैंने, मालूम है ना? अगर मैंने डाला 5 3 5 तो इट विल बी 3x रेज टू 5. गॉट इट? यस यस सर. सर. ये मेरे को मतलब, आई होप अभी हमने इतने सारे लिंक लिस्ट के प्रोग्राम किए तो शायद तुमको जम रहा है ये मैं क्या बोल रहा हूँ. यस? यस सर. तो ये डिस्प्ले फंक्शन. एंड देन वी हैव दिस इंसर्ट एंड. इज सिंपल. इंसर्ट एंड है बेटा. अगर स्टार्ट नल है तो स्टार्ट को बोलो न्यूरेक. इंसर्ट एट द एंड है. नहीं तो P क्या करेगा, लास्ट नोड तक जाएगा और P के नेक्स्ट को बोलने का न्यूरेक. कम ऑन,
This is insert at end in singly linked list. Okay? Yes, sir. Yes. Let me execute this. अपने आप समझेगा. और मैं चाहता हूं आप लिखो भी, so that it is very good program. एग्जाम में 3 बार पूछा जा चुका है. It has been asked 3 times. आपके प्रैक्टिकल में भी रहेगा ये क्वेश्चन. एंटर पहला लिंक लिस्ट ना, एंटर नंबर ऑफ टर्म 5 इक्वेशन. तो 3x raised to 5, 7x raised to 3, 9x raised to 1, 12x raised to 0. 5 टर्म ना, 1 2 3 4. अरे बाप रे, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ कर दिया मैंने. रुको, मैं उतने वाले मैंने इतने ओके. 5 6x raised to 5, 4x raised to 4, 3x raised to 3, 2x raised to 1, 9x raised to 0. अब नंबर ऑफ टर्म सेकेंड पॉलिनॉमियल नंबर ऑफ टर्म 3 ही देते हैं. 5x raised to 4, 3x raised to 2, 9x raised to 0. फर्स्ट पॉलिनॉमियल देखो, 6x raised to 5. कैन यू सी इट? 4x raised to 4, 3x raised to 3, 2x raised to 1, 9x raised to 0. सेकेंड पॉलिनॉमियल 5x raised to 4, 3x raised to 2, 9x. तो एडिशन क्या होगा? देखो 5 4, तो 5 आ गया, 6 एंड देन 4 आया. 4 देखो ऐड हो क्या आया, 4 + 5 9x raised to 4 ना बेटा. क्यूब 3 एज इट इज आ गया, 2 एज इट इज आ गया, 1 एज इट इज आ गया, और 0 वाला ऐड हो गया. देखो 9 + 9 18. Yes, sir. एक काम करो, आई वांट यू टू राइट द प्रोग्राम. दिस इज द लास्ट प्रोग्राम ऑफ सिंगल लिंक लिस्ट. और आज के दिन आपको ग्राफ का कुछ लिखना नहीं है, तो मैं चाहता हूं आप यू राइट दिस प्रोग्राम. दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन. राइट अ सी प्रोग्राम टू परफॉर्म एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल. प्लीज राइट.
प्लीज कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन होगा तो लेट मी नो बेटा। अरे लिख रहे हो ना भाई? यस सर। सर स्क्रॉल कीजिए। Yes, beta. This is very important question examination point of view. This is simple insert end. एक नया नोड बनाया न्यूरेक, C को CC यानी कोएफिशिएंट का वैल्यू, E को E एक्सपोनेंट का वैल्यू, नेक्स्ट इज नल. If start is null, then start is null. सर स्क्रॉल कीजिए। Okay, okay.
ओके बेटा? Yes, sir. ओके। स्क्रॉल करो बेटा, डिस्प्ले फंक्शन। Yes. स्क्रॉल करो बेटा। अरे लिख रहे हो ना प्रभु, तुमको ये इंपॉर्टेंट Yes, sir. क्वेश्चन है। It will be one of your experiment also. It will be in practical exam also. And trust me, there are 3 to 4 occasion. It was in final exam also. Should I scroll? Yes, sir. It is that important a question. This is very important question.
सर स्क्रॉल कीजिए ना. Yes, yes. सर स्क्रॉल. Yes, yes. Main you have to write this because it is not a menu driven, huh? Is it done? Yes, sir. Okay.
हो गया बेटा? Yes, sir. Done. Okay, just give me 1 minute. Just give me 1 minute. Okay, fine.
So can we start with, so this was this was addition of polynomial using linked list. With this we finished our topic linked list. जैसे मैंने आपसे कहा था कि after this actually I was supposed to start trees, but then we decided that we will go ahead with different sequence. So now we will start with graph chapter. After graph we will finish searching, and then at the end we will give lot of time to trees, because trees is by far the most important chapter you will have after linked list. Okay, so can we start with graph, beta? Yes, sir. Okay, so now we are going to start with graph data structure. Now अगर मैं आपसे बोलूं भाई ये ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर दिखता कैसे है, ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर दिखता कैसे है, तो आप इतना समझिए, कंसीडर suppose these are vertex. I'm using the word vertex, please. Huh? Suppose these are vertex A, B, C, D, and E, and these vertex are connected to some edge. Edge in any sequence. Huh? Suppose this is what it is. Suppose this is. You know what? These vertex, they belongs to the same plane. Same plane matlab they are in a single plane. You can understand now when I'm talking about plane. So there is no hierarchy, single plane. So we have 5 vertex. They are connected through edges and they are placed in single plane. Is it clear? Yes, Yes. sir. So how do we represent it? A graph is collection of vertex through edges. A graph is a collection of vertex connected through edges. Connected through edges, and all the vertex belongs in same plane. मतलब कोई पैरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप नहीं है, ऐसा नहीं है कि पहले समझ रहे हैं मेरे कहने का क्या मतलब है. तो हाउ डू वी रिप्रेजेंट इट? A graph is presented as G equal to V comma E. बेटा मैंने parenthesis लिखा है, तो here what is V? Set of vertices. तो अगर मैं ऊपर का एग्जांपल लूं तो it will be A, B, C, D, E. E is set of vertex. सेट का आपने डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा कि सेट का सिग्निफिकेंस है कि एलिमेंट का कोई फिक्स ऑर्डर नहीं है और एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकते, बराबर ना? मतलब मैंने ए बी सी डी ई लिखा है, आप उसको किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं. एंड व्हाट इज ई? ई इज सेट ऑफ एजेस. अभी एजेस क्या है बेटा? When I say A to B, there is an edge from A to B. Have I associated any direction with the edge? No. So when there is no direction associated with the edge, we say it is bidirectional edge. Means right now, if there is an edge between A and B, no direction, then the edge will take you from A to B also. You can go from B to A also. This is how we represent. A to B is one edge. Then B to C is another edge. A to E is another edge. A to D is another edge. B to D is another edge.
C to D is another edge. 7 edge ना, so A to D रह गया, A to B, A to E, A to D, B to C बाकी है, B to C is another edge. So this is set of edges and set of vertex. Any confusion? Any confusion? No, sir. Since सर B2C लिखा है ना आपने वो सेकंड पे? अच्छा लिखा है क्या ऑलरेडी? एक मिनट में ध्यान नहीं दिया, रुक रुक रुक, फिर कोई तो एक मिसिंग हो गया होगा मेरे से। ए से बी कितने, 1 2 3, D2E मिसिंग, D2, हाँ D2E मिसिंग है, सॉरी। So D2E is missing. So since the edges do not have direction associated with it, we call it as undirected or bidirectional graph. समझ में आ गया? हम इससे अनडायरेक्टेड बोले या बाई डायरेक्शनल ग्राफ भी बोल सकते हैं। कोई दिक्कत? नो सर। सो अब मैं थोड़ा सा, अब इसमें मैं थोड़ा सा और डिटेल दूंगा। जब जैसे हम सारी वैरायटीज देखते हैं, कंसिडर अनडायरेक्टेड ग्राफ, जिसको मैंने आपको क्या कहा कि हम बाई डायरेक्शनल भी कहते हैं। नाउ सपोज 1 2 3 4, 1 2 3 4, सपोज ये है ऐसा, ठीक है? तो इसमें V क्या होगा? 1 2 3 4। नाउ और एच सेट क्या होगा बेटा इसमें? एच सेट होगा 1 से 2, 1 से 3, 2 से 3 एंड 2 से 4। लेकिन अगर मैंने डायरेक्टेड ग्राफ कर दिया, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डायरेक्टेड ग्राफ। हियर डायरेक्शन इज associated with every edge। हर एज के साथ डायरेक्शन एसोसिएटेड है। यहाँ हर एज के साथ क्या एसोसिएटेड रहेगा बेटा? डायरेक्शन। एग्जांपल अगर मैं देखो यहाँ पे, वी हैव सपोज 1 2 3 4, 1 2 3 4, सपोज ये डायरेक्शन है। कहाँ से कहाँ जा रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। सपोज देयर इज डायरेक्शन। नाउ इफ इट इज अ डायरेक्टेड एज फ्रॉम 1 to 2, then we can only go from 1 to 2, we cannot go from 2 to 1 using that edge। got it? Yes, sir. तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? G is V, E। ये एंगुलर ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स डायरेक्टेड एज। एंगुलर ब्रैकेट्स means directed graph। ऐसा फिक्स नहीं है। पैरेंथेसिस मींस, ये पैरेंथेसिस है ना, तो यहाँ भी G क्या है? V, E। पैरेंथेसिस मींस अनडायरेक्टेड। ना इसको, इसमें V क्या होगा मेरा? V नॉर्मल 1 2 3 4 होगा। वर्टेक्स का कोई प्रॉब्लम नहीं। एच सेट देखो क्या होगा? एंगुलर ब्रैकेट 1 2। so now when in angular bracket when you write 1 2 means it is a directed edge from 1 to 2, ठीक है? and then 2 to 3, 2 to 4, 3 to 1,
everyone got it? समझ में आया डायरेक्टेड एज बेटा? Sir. ना अब एक छोटा सा कंक्लूजन होगा नोट में, इन अनडायरेक्टेड एज, इन अनडायरेक्टेड ग्राफ बेटा ऐसा कभी नहीं होगा कि कुछ एज के पास डायरेक्शन है, कुछ एज के पास डायरेक्शन नहीं है, ऐसा कभी नहीं होगा। या तो किसी के पास डायरेक्शन नहीं है या तो सबके पास डायरेक्शन है, ठीक है। इन डायरेक्टेड ग्राफ इफ n is number of vertex, समझो n एक वर्टेक्स है बेटा, n is number of vertex, जैसे ये 4 वर्टेक्स है 1 2 3 4, what is the maximum number of edge can we have? See, this edge is undirected edge, so it is bidirectional, so it connects 1 to 2 also, 2 to 1 also, so every is connected to every other, इससे ज्यादा पॉसिबल है क्या बेटा? तो इफ n is number of vertex, मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस कितने होंगे? देखो 4 है ना बेटा, 4 तो 6 है ना, so n into n minus 1 by 2, n into n minus 1 by 2, check कर लो, 4 into 3, here it is 4 into 3 by 2, 6 is possible, लेकिन अगर यही डायरेक्टेड ग्राफ होता, अगर एक डायरेक्टेड ग्राफ होता, if n is number of vertex, देखते हैं जरा, तो मैक्सिमम बेटा 1 2 3 4 डायरेक्टेड है, तो we can have h from 1 to 2 at the same time, 2 to 1 also, मैक्सिमम नंबर चल रहा है ना, तो 2 to 4 4 to 2 also, this here this similarly this, can you understand? तो n minus 1 by 2 नहीं होगा, n minus 1 होगा, because it is not ऊपर 2 क्यों? because 1 to 2 basically serves both the purpose, from 1 to 2 as well as 2 to 1, so basically maximum number of edges कितने होंगे? 2 times n minus 1 by 2 ना, so that is n minus 1, agreed or not? Yes, sir. हाँ, तो ये हमारे कुछ टर्मिनोलॉजी है। नहीं, हमने एक बात नोटिस की, इन अबव ग्राफ्स देयर आर नो वेट, हम वेट बोले या कॉस्ट बोले, वेट और कॉस्ट एसोसिएटेड विद द एज, किसी भी एज के पास वेट या कॉस्ट नहीं है, ठीक है। तो वी कॉल all the above graphs as unweighted graph, अनवेटेड ग्राफ मतलब एज के साथ कोई, देखो यहाँ 1 to 2 एज है, बट मैंने कोई इसको वैल्यू नहीं दिया, कोई कॉस्ट नहीं दिया, तो इसको बोलते हैं अनवेटेड ग्राफ। क्या बोलते हैं बेटा? अनवेटेड ग्राफ। नाउ वी विल लर्न समथिंग कॉल्ड एज वेटेड ग्राफ। नाउ वेटेड ग्राफ क्या होता है? इफ द एज ऑफ द ग्राफ has weight associated with it, it is known as weighted graph। इसको हम वेटेड ग्राफ बोलते हैं। एग्जाम्पल, सपोज मैंने कहा ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी है, ई है, एफ है, ए बी सी डी ई एंड एफ, एंड सपोज वी हैव
this certain some edges, समझो, और ये एज पे मैंने कॉस्ट दे दिया है 2 5 4 2 3 4 1 3। यहाँ पे अगर आप देखेंगे हर एज के साथ कोई कॉस्ट है। अब आप बोलोगे सर कॉस्ट का मतलब क्या होता है? इट कैन गो लाइक दिस। When I say there is an edge from A to B, it may represent that 2 may represents 200 kilometer, that 2 may represents 2 hour to go from A to B. If A and B are two cities, suppose A and B are representing two cities. So from A to B, it can be 2 hours. It may represent time. It may represent 2000 kilometer or 200 kilometer. समझ रहे? It may represent cost to travel from A to B. That too can be 2000 rupees, 20,000 rupees. The scale can be different. Are you getting me what I'm trying to say, beta? Yes, sir. Yes, sir. So we say there is a cost associated with it. ठीक है? Now there is cost associated with it. Now मैंने कहा कि जब हर एज के साथ कॉस्ट एसोसिएटेड होगा तो वेटेड होगा। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पाथ। व्हाट इज पाथ? सी, पाथ फ्रॉम वर्टेक्स AI to vertex AK is set of vertex AI plus 1, AI plus 2 to AK such that AI comma AI plus 1 belongs to E. Belongs to E मतलब belongs to edge set. Belongs to edge set means there is an edge from AI to AI plus 1. Example, let's say path from A to F. Suppose I want path from node A to F. A to F जाने के बहुत रास्ते हैं। A to B, B to D, D to F, A to C, C to E, E to F, A to B, B to C, C to D, D to F. Are you getting it, beta? So मैंने कहा, let's say one of the path from A to F is what? A, B, D, F. A, B, D and F. तो यहाँ पे ये A I है और यहाँ पे ये A K है because we want path from vertex AI to AK. So here we have B. B is what? AI plus 1, AI plus 2 and so on. So that every, see, path from vertex AI to AK is set of vertex such that every AI to AI plus 1 is an edge. So अगर आप मुझे देखें, अगर ये पाथ है मेरा, बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर ये पाथ है मेरा, so this A to B, it belongs to edge set. Edge set मतलब there is an edge from A to B. B to D also belongs to edge set. There is an edge from B to D, and D to F also belongs to edge set. There is an edge from D to F. I hope you got the definition. Yes or Yes. no? कोई confusion? Any confusion, Nahi. beta? Okay, so this is what path is about. Then there is something called as connected node. Connected node क्या होता है बेटा? अगर मैं बोलूं A से A वर्टेक्स से मैं किसी भी वर्टेक्स पे जा सकता हूं कि नहीं? वर्टेक्स A से मैं किसी भी दूसरे वर्टेक्स पे जा सकता हूं कि नहीं, पहले बताइए। हाँ सर। इसका मतलब two vertex I and AJ, two vertex AI and AJ are connected if there is a path from AI to AJ. Two nodes or vertex AI and AJ are said to be connected
if there is path from AI to AJ. Got it? अगर AI से AJ को पाथ है तो हम बोलेंगे वो कनेक्टेड है, नहीं तो हम बोलेंगे पाथ जरूरी नहीं डायरेक्ट पाथ. आई एम नॉट सेइंग देयर शुड बी इमेज कनेक्ट एडजेसेंट. एडजेसेंट अलग है. AI से किसी भी AJ पे अगर मैं जा सकता हूँ, रास्ता है, तो कनेक्टेड नोड. देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कनेक्टेड ग्राफ. कनेक्टेड ग्राफ मतलब if all the nodes of the graph are connected, then we say the graph is connected. समझ रहे? if all the nodes or vertex of graph are connected, then the graph is said to be connected graph. जैसे अगर ऊपर के एग्जांपल में देखूं, यहाँ पे मैं किसी भी एक वर्टेक्स से किसी भी दूसरे वर्टेक्स पे जा सकता हूँ. It's not only A. From B I can go to any. From C I can go to any. From D I can go to any. From E I can go to any. And from F also I can go to any. तो हम ऐसा बोलेंगे in above graph from any vertex there is path or connected or connection to any other vertex. Agreed or not? Therefore, above graph is connected graph. कोई confusion? Hello? No, sir. Sir, हाँ बोलो every बेटा. vertex be connected to every other vertex क्या? हाँ देख लो ना. A is connected to all other vertex ना. When I say connected, लेकिन I सर mean A तो D को connected नहीं है ना? अरे बेटा via B connected है ना. I never said adjacent. I mean connected. There is a path from A to D? Yes, you can go via B also. You can go via C also. You can also say A, C, E, F, D. Connected का मतलब रास्ता है क्या? बस. See. Okay, sir. Now आप जो बोल रहे हैं उसको adjacent node कहते हैं. Two nodes are said to be adjacent if they are what? If there is an edge between them. Two nodes or vertex are said to be adjacent if there is an edge, single edge between them. तो अगर मैं बोलूं in above graph adjacent vertex of A कौन होगा? बताओ. A के adjacent vertex कौन होंगे? बोलते रहो. A का डायरेक्ट एज किस? B and C. B का adjacent D. अरे D का एक A भी है, C भी है, D भी है. B से डायरेक्ट एज किसके साथ है? A के साथ है, C के साथ है, D के साथ है. Got it? Yes, sir. F का डायरेक्ट एज किसके साथ है? D and E. D, पर E. तो now you got the difference between connected and adjacent बेटा. Connected मतलब रास्ता Yes, होना sir. चाहिए. तो इसलिए मैंने लिखा there is a path. See if you can understand. From in graph from any vertex there is a path or connection to any other vertex
Hence above is a connected graph. उसको adjacent vertex of A कौन रहेगा? B and C. Is it clear? Yes, sir. कोई कंफ्यूजन? So हमने ग्राफ के बारे में अब तक क्या क्या पढ़ा? हमने भाई ये पढ़ा कि भाई ठीक है, मैंने आपको ट्री करके कुछ शब्द यूज नहीं किया। हमने पढ़ा कि भाई सब सेम प्लेन में है बेटा, सेम प्लेन इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, नहीं तो फिर ट्री और ग्राफ में फर्क ही नहीं दिखेगा। हमने कहा कि भाई डायरेक्शन नहीं है तो बाई डायरेक्शनल है, पैरेंथेसिस, डायरेक्टेड है एंगुलर ब्रैकेट, वेट एसोसिएटेड नहीं है इसलिए अनवेटेड बोला हमने। वेट कैन बी कॉस्ट, इट कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट एनीथिंग। फिर अगर हमने कहा वेट है तो वेटेड है, ध्यान से। पाथ connected, if there is a path between A to E then A and E are connected to each other, ठीक है। कनेक्टेड नोड जैसे हमने कहा, कनेक्टेड ग्राफ, अगर हर नोड से हर दूसरे नोड को रास्ता है तो ग्राफ इज कनेक्टेड। अच्छा, हमने ये भी कहा कि अगर n वर्टेक्स है बाई डायरेक्शनल तो मैं तो एक सेकंड ना बेटा, एक सेकंड।
Okay, so adjacent node clear, beta? Hello. Yes, sir. Now very important exam point of view कि सर ये जो आपने हमको ग्राफ बता दिया, ये तो हमको ऐसा हमने बना दिया, ऐसा वर्टेक्स बना दिया, लेकिन कंप्यूटर को कैसे बताएंगे ग्राफ? हाउ टू रिप्रेजेंट अ ग्राफ इन कंप्यूटर मेमोरी, जिसको हम कहते हैं मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ। ग्राफ को कंप्यूटर की मेमोरी में कैसे कंप्यूटर को कैसे बताए कि ग्राफ ऐसा दिखता है, कंप्यूटर को कैसे बताए? तो देयर आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ, ये आपके आई में भी आएगा। देयर आर टू वेज टू रिप्रेजेंट ग्राफ इन कंप्यूटर मेमोरी। इन कंप्यूटर मेमोरी मतलब हम रैम की बात कर रहे हैं। पहला है बेटा एडजेसेंसी मैट्रिक्स। एज द नेम सजेस्ट, एडजेसेंसी वो सिर्फ ये बताएगा कौन नोड किस नोड को एडजेसेंट है। इट इज n by n matrix. What is n? Number of vertex. ये n by n matrix, and here let the matrix be represented by adj. Adj of I comma j is 1 if there is an edge between I and j vertex, and it is 0 if there is no edge between vertex I and j. Now example देखो जरा, suppose मेरे पास एक छोटा सा ग्राफ है, 1 2 3 4, and suppose this is the scenario. ठीक है, अब मैं इसको, मेरे को तो देख के समझ में आ रहा है ना बेटा, मेरे को तो देख के समझ में आ रहा है ना कि 1 और 2 के बीच में, जब मेरे पास आंखें हैं, मेरे पास दिमाग है, मशीन को तो नहीं समझेगा ना। अच्छा, ये जो ग्राफ है ये क्या है? अनवेटेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ, करेक्ट? तो देखो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। I will create, it will be represented using adjacency matrix of 4 by 4 order, क्योंकि 4 वर्टेक्स है, n by n matrix. Can you recall? 1 2 3 4. Now 1 से 1 एज है क्या? नहीं है तो 0. 1 से 2 एज है क्या? हाँ. 1 से 3 एज है क्या? डायरेक्ट नहीं. तो 1 से 4 एज है क्या? हाँ. तो इसका मतलब क्या है? 1 के सारे एडजेसेंट, 1 के एडजेसेंट कौन है? 2 4. So 2 में 1 है, 4 में 1 है, बाकी 0. You got the meaning of adjacency? It will Yes. represent all the adjacent node of row vertex 1. 2 से 1 है, 2 से 2 नहीं है, 2 से 3 है, 2 से 4 भी है, 3 से 1 नहीं है, 3 से 2 है, 3 से 3 नहीं है, 3 से 4, 3 से 3 का मतलब ऐसा लूप बैक, समझ रहे हैं बेटा? हमारे पास ऐसा लूप कोई भी एज नहीं है, उसको हम लूप बोलते हैं। अच्छा, 3 से 4 नहीं है, 4 से 1 है, 4 से 2 है, 4 से 3 नहीं है, 4 से 4. You got it? Unweighted, undirected edge graph. समझा? Yes, sir. Now suppose ये for weighted directed is not very important word. Let me इसको हम दोनों साथ में पढ़ते हैं, weighted directed graph. Now in weighted directed क्या होता है जरा देखना. Weighted directed में क्या होता है? adj of I comma j, ij are my vertex. It is, instead of 1 we will write cost or weight of edge from I to j, and 0 if no edge. समझा मेरे कहने का क्या मतलब है? अब एग्जांपल देख लो बेटा. सपोज मैंने ऐसा लिखा है 1 2 3
and 4. Consider. फोर, 5, 3, 2. अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन भी है, एज भी है. यहाँ पे क्या होता है देखो ना बेटा, 1 से 2 में भी 1 है, 2 से 1 में भी 1 है, 1 से 2 में भी 1 है, 2 से 1 में भी 1 है, क्योंकि बाई डायरेक्शनल है. यस और नो? करेक्ट? अरे बोलो भाई. Yes, sir. यहाँ पे देखो ऐसा नहीं, यहाँ पे देखो कैसे बनेगा. ए डी जे ऑफ 4 4 4 वर्टेक्स. तो देखना जरा, ओके. आई और जे के बीच में अगर एज है तो कॉस्ट लिखने का. 1 से 1 नहीं है, 1 से 2 है, 4 लिखने का. मैंने 1 नहीं लिखा, 1 लिखा मतलब एज है, बट यहाँ एज को, अगर एज को कॉस्ट नहीं होता ना बेटा तो मैं 1 लिखता. समझा? Yes, sir. Yes. 1 से 3 2, 1 से 4 0, 2 से 1 नहीं है यहाँ, बिकॉज इट इज डायरेक्टेड है. 2 से 1 नहीं है, 2 से 2 नहीं है, 2 से 3 3, 2 से 4 5, 3 से 1 नहीं है, 3 से 2 नहीं है, 3 से 3 नहीं है, 3 से 4 नहीं है, 4 से 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो अब ये देखना है कि सर ये प्रोग्राम से कैसे करेंगे. करेक्ट? टू रीड अ ग्राफ, मुझे यूजर से ग्राफ रीड करना है. टू रीड अ ग्राफ, जरा ध्यान से. सो लेट मी राइट अ फंक्शन void रीड ग्राफ. मैं एक ग्लोबल एरे बना देता हूं बेटा, ठीक है? नहीं तो अंदर भी बना देते हैं. int g 10 10, मतलब 10 वर्टेक्स का मैक्सिमम ये ग्राफ बनेगा. एंड दैट वर्टेक्स, दैट पूरा 2D array is initialized with 0. Agreed or not? Yes, sir. Let G represents graph adjacency matrix. Size is 10 10 to maximum. This will work for 10 vertex. If you want more, just increase the size. Correct? Let E be the number of edges, V be the number of vertex, A and B will be the edge of the vertex of an edge, and let C be the cost. देखो जरा, सबसे पहले मैं यूजर को बोलूंगा प्रिंट एफ. समझो मुझे एक ग्राफ बनाना है. वन टू थ्री फोर 5 3 2 1, ये ग्राफ बनाना है मुझे. सो कितने वर्टेक्स है? पहले मैं यूजर बोलूंगा एंटर नंबर ऑफ वर्टेक्स. एंटर नंबर ऑफ वर्टेक्स. स्कैन एफ. कितने वर्टेक्स बेटा? v. तो v इज 4. यहाँ पे v इज 4. देन प्रिंट एफ. अच्छा, ये we, you know, the one we are writing for is undirected graph. Let us write it for undirected graph. Directed के लिए क्या करना है आपको पता है? रुको, let us write it for undirected. Okay. Now enter number of edges. Tell me how many edges? 4. 4. So E is 4. Now there are 4 edges. Correct? So we need those for edge information कि वो दोनों edge, जैसे edge
कोई भी पकड़ो, एक एज 1 और 2 वर्टेक्स के बीच में है, क्योंकि 2 और 3 के बीच में देखो कोई एज नहीं है. कैन यू अंडरस्टैंड? सो इट्स नॉट ओनली नंबर ऑफ एज, वी वांट कि ये एज कौन से वर्टेक्स के बीच में है. तो नाउ रीड एज इंफॉर्मेशन, बराबर ना बेटा? तो देखो अभी क्या होगा, देखो जरा, ये 10 10 0 to 9 0 to 9 बन गया, बट 4 बोला मैंने, तो 4 बोला तो 0 1 2 3 जाएगा. 1 2 3 पकड़ लो. एक्चुअली जब हम प्रोग्राम करेंगे तो v+1 बनाएंगे. यू नो व्हाई v+1? वी विल नॉट यूज जीरो वाला, समझा? ओके सर. तो वो जो जीरो वाला है ना, अपन उसको यूज ही नहीं करेंगे, जीरो एंट्री वाला. तो बेसिकली 1 2 3 4 1 2 3 4 we will fill this for 4h, enter edge info for, I will ask this information e number of time. ठीक है, printf enter vertex associated with edge. scanf देखो बेटा इंटरेस्टिंग है, %d एम्परसेंड ए एम्परसेंड बी. तो देखो पहले मैंने क्या बोला, लेट अस, आई मीन ये तो 4 है, मैंने पहले बोल दिया एंटर वर्टेक्स एसोसिएटेड विद द एज. सपोज एज 1 is 1 2. So what I want, what are the vertex associated with the first edge? तो वो जो भी वैल्यू देगा वो a और b में आएगा. तो पहली में a का वैल्यू 1 रहेगा, b का वैल्यू 2 रहेगा. तो क्या लिखेंगे, g of a b equal to g of b a, and that will be अभी वो कॉस्ट तो लिया नहीं. अच्छा अगर अनवेटेड होगा, देखो sorry, it is, हम weighted बनाए ना, I just missed that point. I thought it is unweighted graph. हमने हमने edge के associated vertex मांग लिए. अब हम क्या कर रहे हैं, enter the cost of edge, scanf %d %c. Now g of a b equal to g of b a equal to c. Now try to understand this. पहले ये सब 0 0 हो गया, इनिशियली मैंने सब 0 0 बोला था कि नहीं? Yes sir. See, this is 0 now, this will initialize everything to 0. I need information for 4 edge. ठीक है, तो I is 1. समझो A का वैल्यू 1 डाला, B का वैल्यू 2 डाला, कॉस्ट क्या है, 1 2 का कॉस्ट क्या है, 2. सो इसका मतलब G of 1 2 is G of 2 1 2. तो 1 2 is 2 2 1 is 2. समझ रहा है क्या हो रहा है? So you have entered edge information for the first edge. Now I is 2. Second edge समझो 1 4 5. तो A is 1, B is 4, cost is 5. So G of 1 4 is G of 4 1 is 5. So 1 4 is 5, 4 1 is 5. समझ रहा है बेटा कैसे जा रहा है? आपका ये फिर चेंज हो रहा है ना एडजेंसी मैट्रिक्स में. Yes sir. एंड नाउ थर्ड इज सपोज 4 3 है, 4 3. I is 3, A is 4, B is 3, C is 1. So G of 4 3 equal to G of 3 4 equal to 1. 3 4 1 4 3 1.
and finally I is 4. I is 4. 4 क्या है? 1 3 3. A is 1, B is 3, C is 3. So G of 1 3 equal to G of 3 1 equal to 3. So 1 3 3 3 1 3. So now you got it. So this is what your. अब बेटा ये जो एडजेंसी मैट्रिक्स है, मेरे को देख के ये तो समझ जाता है ना कि कौन कौन से दो वर्टेक्स के बीच में एज है और उसका कॉस्ट क्या है. कम ऑन. Yes, sir. ना अगर ये वेटेड नहीं होता तो आई वुड नॉट हैव आस्क्ड एंटर द कॉस्ट इंस्टेड ऑफ सी. व्हाट वुड हैव रिटर्न? कम ऑन टेल मी. सिंपली 1. 1 1. समझे आप? सो नोट, इफ अनवेटेड होता तो हम क्या लिखते? G of A B equal to G of B A equal to 1. अच्छा, अनडायरेक्टेड होता तो सिर्फ A B. हाँ, G of Yes. A B equal to C अगर वेटेड है, G of A B equal to 1 अगर अनवेटेड है. समझा कि नहीं समझा? ये बेटा अनडायरेक्टेड है ना, तो G of AB is same as G of BA. And we will read this for how many time? जितने एजेस है उतनी बार पूछेंगे हम. This is end of my function and this is end of my for loop. I hope it is making sense to you all. Hello. Yes, sir. Okay, so this is where we will stop. हमने decent amount of program कर लिया है. This Wednesday we will, I guess we should finish this chapter. Graph is very small chapter. All you need have depth first search and breadth first search, 2 programs. Is it okay? Okay, sir. Okay, let me download your attendance. Okay, thank you very much. Let me call up the session. I'll upload the content. Okay, beta? Thank you, sir. Yes, sir. Thank Thank you, you. beta. Chalo, bye, bye, bye. Thank you, sir.